about the rusting of iron. What are the necessary conditions for rusting? Anyone? Necessary conditions for rusting and necessary things due to rusting process continue or starts. First is water and second is oxygen. When these two things are present, then process of rusting takes place. Okay? H2O, water and oxygen. If only water is present, oxygen is not present, then rusting did not take place. If only oxygen is present and water is not present, then rusting can't take place. Today we study about the prevention of corrosion. Its points are removal of stains, paints and greasing, alloying and metallic alloy. First we see a video about these topics. Only to oxygen. Stop all 4 test tubes with a rubber bottom. Let's think about cars for a moment. The car that you had in mind was likely painted with your favorite color. The paint is not only there to make your car look pretty, but it has a more important purpose, to prevent rusting. When iron and steel are exposed to oxygen and moisture, rusting will occur. Rusting describes the corrosion of iron and steel. The term corrosion is used to describe the breakdown of a metal when exposed to the environment. When we say rusting को इन्होंने define किया है breakdown of metal in the presence of water and oxygen. जब water and oxygen मौजूद होगी तो rusting का process start होगा. When exposed to the environment. When we say a metal corrodes, we mean that it has reacted with water and oxygen from the environment to form their respective oxides. We can demonstrate this using a simple experiment. Place an iron nail in 4 test tubes. Fill one with regular tap water until the nail is submerged. Fill another with regular tap water and add half a spoonful of sodium chloride, regular table salt. Shake from side to side to ensure that sodium chloride fully dissolves. Fill the 3rd test tube with recently boiled water and add a thin layer of oil. When we boil the water, we remove any dissolved oxygen, and the layer of oil prevents any oxygen from further dissolving. In the last test tube, add a spoonful of calcium chloride. Calcium chloride. सिंपल एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया है 4 टेस्ट ट्यूब्स लिए हैं. फर्स्ट में इन्होंने वाटर और एक में ईल डाल दिया. सेकंड में NaCl सॉल्ट सोडियम क्लोराइड जिसको आप टेबल सॉल्ट कहते हैं जो आप घरों में खाने में यूज करते हैं, उसको पानी में मिक्स किया और साथ में उन्होंने उस वाटर में ईल डाला. अब थर्ड में इन्होंने क्या किया, वाटर को उन्होंने बॉयल किया. बॉयल करने से क्या हुआ, जो भी डिजॉल्व ऑक्सीजन थी वो उसके बाद उन्होंने ऑयल ऐड कर दिया. ऑयल क्यों ऐड किया, क्योंकि ऑयल दोबारा से वाटर में ऑक्सीजन को मिक्स नहीं करेगा. फोर्थ में क्या किया, कैल्शियम क्लोराइड डाला है, सिर्फ ना इसमें वाटर डाला है ना कोई और चीज डाला. तो इसको अब कुछ मिनट याद रख देंगे. यहाँ पे मैंने एक्सपेरिमेंट किया है, इसमें सॉल्ट एंड वाटर है. तो सेकंड यहाँ पे दिखाया हुआ इस टेस्ट ट्यूब में ओनली वाटर. अब देखें फर्स्ट 2 टेस्ट ट्यूब जो है, फर्स्ट 2 कॉलम्स, उनमें क्या था, वाटर और ऑक्सीजन दोनों चीजें मौजूद थी. तो इस वजह से रस्टिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो गया. अब थर्ड टेस्ट ट्यूब में उन्होंने ऑयल डाल दिया. इसका मतलब है ऑक्सीजन इसमें नहीं जा सकी. ठीक है, तो इसका मतलब है सिर्फ वाटर मौजूद है, ऑक्सीजन मौजूद नहीं है. रस्टिंग होगी? रस्टिंग नहीं होगी, क्योंकि जब वाटर और ऑक्सीजन दोनों मौजूद होंगे तब रस्टिंग होती है. ऑयल ने ऑक्सीजन को अंदर जाने से रोक दिया, जिसकी वजह से रस्टिंग का अमल नहीं हुआ. फोर्थ टेस्ट ट्यूब में उन्होंने क्या किया, कैल्शियम क्लोराइड डाला है, इसमें वाटर नहीं है, इसकी वजह से रस्टिंग नहीं हुई. कैल्शियम क्लोराइड क्या करता है, ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है. अब आप इन टेस्ट ट्यूब में देखें तो फर्स्ट 2 में जो नेल्स थे हमने कील्स डाले हैं, उसमें क्या हुआ है, ब्लैक हो रहे हैं. नजर आ रहे सबको? ब्लैक हो गए. इसी तरह आप सेकंड
और इसमें इसमें वाटर नहीं था और कैल्शियम क्लोराइड ने वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया। Light removes the moisture or water. So in the first test tube, the nail is exposed to oxygen and moisture. In the second test tube, the nail is exposed to oxygen, moisture, and salt. So in the third test tube, the nail is only exposed to water. In the fourth test tube, the nail is exposed only to oxygen. Stop all 4 test tubes with a rubber gum and let stand for a couple of days. You will find that the nails in the first and second test tubes have rusted. In particular, the nail in the second test tube has rusted more than the nail in the first test tube, and the rust has likely flaked off. You may see a reddish-brown precipitate at the bottom of these tubes. The nails in the third and fourth test tubes have not rusted. So what has happened here? The iron has undergone an oxidation reaction, forming hydrogen for this reaction, which is why the nail in the second test tube formed more rust than the nail in the first test tube. Rust is very costly if we have to constantly replace these items made of iron and steel. Rust can be prevented if we paint the areas exposed to oxygen and moisture. This is done on many bicycles and cars. Another method to prevent rust is by placing a layer of oil or grease. This is done on many bicycle chains. It helps lubricate the moving parts, which reduces friction and slows down the rusting process. Another way to prevent rusting is a sacrificial protection method. पेंट में उन्होंने एग्जांपल दिया आपको साइकिल का पेंट करते हैं ताकि रस्टिंग ना हो। और कोई आपके जहन में एग्जांपल है जो हम रस्टिंग को प्रिवेंट करने के लिए पेंट करते हैं? फैन को भी पेंट किया जाता है ताकि रस्टिंग ना हो। फैन आपके सीलिंग फैन जो आपके रूम में लगे हुए हैं इनको भी पेंट किया गया है। क्यों? क्योंकि इनमें रस्टिंग ना हो। इलेक्ट्रिक कूलर्स को भी पेंट किया जाता है रस्टिंग से बचाने के लिए। उसके अलावा सेकंड उन्होंने एग्जांपल दी है ग्रीस की, ऑयल एंड ग्रीस। अगर किसी चीज के ऊपर, किसी मेटल के ऊपर हम ऑयल या ग्रीस लगा दें तो उसमें भी रस्टिंग का अमल जो है नहीं होगा। ठीक है, जैसे उन्होंने बताया है साइकिल की चेन को हम ग्रीस लगाते हैं और ग्रीस और ऑयल कहाँ पे यूज किया जाता है? सिलाई मशीन में अक्सर आपने देखा ऑयल डाल रहे होते हैं। क्यों डालते हैं? ताकि उसके अंदर वाले पार्ट्स जो है मेटल्स के जो बने हैं उनको और कोई एग्जाम्पल? जब डोर क्लोज करते हैं इनकी आवाज साइड में डालते हैं। हाँ, जब डोर पुराने हो जाते हैं तो अक्सर इनमें से आवाज आना शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि मेटल रस्ट हम ऑयल लगा देते हैं तो फिर रस्ट का अमल रुक जाता है और वो प्रिवेंट हो जाता है। 2 मेथड्स आपको पता चल गए। बताया रिमूवल ऑफ स्टेन्स में ये है कि जब भी किसी चीज को रंग लगना शुरू हम उसको साफ कर दें। ठीक है, इस तरह से हम उसको बचा सकते हैं। और लाइन का आपको पता है मिक्सचर ऑफ मेटल्स। व्हाट इज अ लाइन? मिक्सचर ऑफ मेटल्स को अगर हम मिक्स कर देते हैं तो फिर भी हम उसको रंग लगने से बचा सकते हैं। कैसे? नेक्स्ट आपको called galvanizing. Have a look at this reactivity table. Zinc is more reactive than iron. When exposed to oxygen and moisture, zinc will corrode faster than iron. So if we put them together, zinc protects iron but is sacrificing itself, hence the term sacrificial protection. This method is applied to prevent rusting on ships. And the oxidation of zinc can be described using this following equation. So besides preventing rusting, there is another advantage to this galvanizing process. The formed zinc oxide layer can be removed,
and the freshly exposed zinc can corrode once again, thereby further protecting the iron or steel hull. हाँ जी, अब उन्होंने आपको प्रोसेस बताया गैल्वेनाइजिंग। गैल्वेनाइजिंग में क्या किया है, टू मेटल्स को मिक्स कर दिया है, या एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल की कोटिंग कर दी है। अब यहाँ पे अगर हम जिंक की कोटिंग करेंगे आयरन के ऊपर, तो जिंक ज्यादा रिएक्टिव है आयरन से। जब भी वो एक्सपोज होगा ऑक्सीजन से या वाटर से, तो किसकी सबसे पहले रस्टिंग स्टार्ट होगी? जिंक की रस्टिंग स्टार्ट हो जाएगी, आयरन की रस्टिंग नहीं होगी, क्योंकि जिंक ज्यादा रिएक्टिव। इसी तरह शिप्स में आपने देखा, शिप्स में छोटे छोटे ब्लॉक्स की सूरत में हमने जिंक लगाया है। जब काफी ईयर्स गुजर जाते हैं, काफी साल गुजर जाते हैं, तब क्या होता है, जिंक रस्ट होना शुरू हो जाता है, और जिंक तमाम रस्ट हो जाता है, आयरन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर कुछ अर्से बाद हम वो जिंक प्लेट्स को रिप्लेस कर देते हैं न्यू जिंक प्लेट से। इस तरह से हमारी शिप जो है सेफ रहता है। और टेली कोटिंग में यही बात बताई है, एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल की लेयरिंग कर देते हैं, जिसकी वजह से फर्स्ट मेटल प्रोटेक्ट हो जाता है, सेफ हो जाता है।